Hello bachcho, so let's read this question. CNG is an important transportation fuel. When 100 grams of CNG is mixed with 208 grams of oxygen in vehicles, it leads to the formation of CO2 and H2O and produces large quantity of heat during the combustion. The amount of CO2 or we can say carbon dioxide produced in grams is हमें इसका आंसर देना है नियरेस्ट इंडिजर और हमें सीएनजी को अज्यूम करना है दैट इट इज अ मीथेन। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें इट इज अ सिंपल कंबशन और कंप्लीट कंबशन ऑफ एन हाइड्रोकार्बन व्हिच इज मीथेन। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, so a key concept would be we should know two things. First, what is a limiting reagent because we will be using this term in further question. So limiting reagent हमारा ऐसा reactant होता है reactant which is completely used in a completely used reaction. That is our limiting reagent. On a tray which is used to calculate the number of moles. So number of moles is equals to given mass of the component divided by the moles. Now let us start in this question further. तो इनिशियली अगर हम रिएक्शन की बात करें C4 reacts with oxygen to give CO2 plus H2O. Now let us just balance this equation. This is our balanced chemical reaction. तो इनिशियली हमारे को दिया हुआ CH4 is 100 grams of CNG. Let us write that down as well initially. And then we have a column for final. Initially have 100 grams of methane or we can say CNG and O2 की बात करें तो 2, right? And अगर हम CO2 हमें अभी पता नहीं है कि कितना प्रोड्यूस हुआ है and neither do we know about the H2O, right? पहली बात तो निकाल लेते हैं इन सब चीजों की वैल्यू। पहले हम निकालेंगे इनके नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें मास ऑफ CNG प्रोवाइडेड है, मास ऑफ CNG which is again CH4 is equals to 100 grams. It is given to us in the question. Therefore, अगर हम इसके moles की बात करते हैं, moles of methane CH4 would be 100 divided by its molar mass. Molar mass of methane is 16. So that would be equal to 6.25 grams. Now let us find the moles of O2। तो उसके लिए पहले हमें मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ ऑक्सीजन हमें क्वेश्चन में गिवन है 208 ग्राम्स एज डिस्कस। एंड अगर हम मोल्स की बात करें, मोल्स हमारे हो जाएंगे मोल्स ऑफ O2 will be equals to 200 and divided by molar mass of oxygen is 32. That would be equals to 6.5. Not the unit won't be grams because it's number of moles, it's only be 6.25 and इधर हमारी 6.5 वैल्यू आ जाएगी। So we can see that यहाँ पे हमारे number of moles are in 25 और यहाँ पे let us just remove the given mass because it won't be required। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे हमारे number of moles आ रहे हैं 6.25 एंड यहाँ पे हमारे number of moles आ रहे हैं 6.5, right? So यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं we can see that 1 mole of CH4 which is our CNG gas uses 2 moles of oxygen। अगर हम बैलेंस इक्वेशन देखें uses 2 moles of oxygen। So therefore we can say जो हमारा 6.25 mole of methane which is CH4 or we can say CNG in this reaction react with 6.25 multiplied 2 which is equals to 12.5 moles of oxygen. So there only 6.5 moles of oxygen are there। हमारे पास सिर्फ 6.5 moles of oxygen है। तो हम क्या करेंगे, हमारे को इससे पता चल हमारा जो ऑक्सीजन है it will act as the limiting reagent
क्योंकि सारा का सारा ऑक्सीजन हमारा पूरा है। सो वी कैन से ओनली, देखो 6.5 moles of oxygen are present, moles of O2 are present. So our O2 will act as a limiting agent, will act as limiting reagent. So therefore we can say that therefore produced CO2 will depend on moles of जो भी हमारा reduce होगा, because क्योंकि भी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं that depends on the moles of the limiting reagent. तो यहाँ पे limit agent O2 है, तो produced CO2 will depend on the moles of O2. Let us move on further. From 2 moles of O2, 2 moles of O2, 1 mole of CO2, 1 mole of CO2 is formed. एक बार हम reaction of O2 gives rise to 1 mole of CO2, right? So we can say from 6.5 moles of O2, from 6.5 moles of O2, how much will be formed? 6.5 divided by 2 moles of CO2 will be produced. तो अगर हम weight of CO2 की बात करें, therefore weight of CO2 will be equal to 6.5 divided by 2 multiplied by the molar, or we can say the molecular weight of CO2, which is equals to 44. तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है grams. So her final answer would be 143 grams. Just for basic better understanding of the concept over here, हमारा आंसर तो जब हमारा इनिशियली 6.25 और 6.5 मोल्स थे, तो हमारा फाइनल में आ जाएगा 5 minus 6.5 divided by 2 and O2 is completely used, तो ये 0 आ जाएगा. And if we talk about CO2, इनिशियली तो जब रिएक्ट कर रहा था तो हमारे पास CO2 और H2O तो था ही नहीं, तो इनिशियली वो 0 था और 0 मोल्स थे. बट आफ्टर रिएक्शन CO2 का हमने अभी मोल्स कैलकुलेट करे, दैट वुड बी 6.5 डिवाइडेड बाय H2O पे हमारे 6.5 ही रहते, बिकॉज इट इज इन द लिमिटिंग रेंज. नाउ our final answer comes out to be 143 grams of carbon dioxide will be produced. I hope you understood the question well.